Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Ya Gopijan Vallabha Girivardhari Ya Gopijan Vallabha Girivardhari Yeshoranandana Bhujajanarandana Yeshoranandana Brajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijan Vallabha Girivardhari Jaya Gopijan Vallabha Girivardhari Yashoranandana Brajajanarandana Yashoranandana Brajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astotra Sadashi Shimarabai Charanarvindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astotra Sadashi Shimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Ananta Kodi Vaishnavrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sigaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Ki Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Mathura Dham Ki Shri Navadvip Mayapur Dham Ki Shri Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories are glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. So we are reading from Grandaraj Srimad Bhagvatam. Thank you. Third Canto, Chapter 26, Fundamental Principles of Material Nature, text number 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tathojayam Mudirayat Nashtaprayeshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naishtiki.
samsayortha viparyaso nishchaya smriti. No, wait a minute. Yo, it's this one. Nishchaya smritya evacha swapa ityuchyate buddhir lakshanam ritita pritak. This screen is coming a little on and off. Samsayortha viparyaso nishchaya smritir evacha swapa ityuchyate buddhir lakshanam rititha. Samsayortha viparyaso nishchaya smritir evacha swapa ityuchyate buddhir lakshanam rititha pritak. Please chant. Samsayacha viparyaso nishchicha evacha swapa ityuchyate buddhir lakshanam rititha pritak. Sanchayota viparyaso nishchaya smritirevacha Mataji. Sanchayota viparyaso nishchaya smritirevacha swapaityuchyate buddhir lakshanam rititha pritak. You want to do the word for word? Sanshaya Samsaya Sandeha Atha Tab Viparyasa विपरीत समझ निश्चय सही समझ स्मृति स्मरण शक्ति एवं भी च तथा स्वाप निद्रा इति इस प्रकार उच्चते कहे जाते हैं बुद्धे बुद्धि के लक्षण लक्षण वृत्तितः अपने कार्यों से तथा भिन्न अनुवाद कृष्ण के भाषण में वचन जय। संदेह विपरीत समझ सही समझ स्मृति तथा निद्रा ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है, अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अनुष्ठान करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवत में भगवान कहते कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। जैसा कि पातंजलि योग पद्धति बताया गया है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय। बुद्धि से मनुष्य वस्तु को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वह है। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर है या नहीं। यह ज्ञात करना किसी की पहचान भौतिक है या आध्यात्मिक है संदेहास्पद रहता है। जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म बोध का पता चलता है। यह विपर्यास है। झूठी पहचान का पता
चल जाने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। वास्तविक ज्ञान को यहाँ निश्चय अथवा सिद्ध व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। यह व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका है। व्यवहारिक सिद्ध ज्ञान से मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। स्मृति का स्मरण शक्ति है और स्वाप का निद्रा है। बुद्धि को क्रियाशील रखने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता। भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं, वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष है जिनका वर्णन पातंजलि योग पद्धति तथा कपिल देव के सांख्य दर्शन में श्रीमद् भागवत में हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वावदन्तिकं। देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कंथा राधा कंथा नमस्तुते। तप्त कंजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ श्री द्वारकाधीश मंदिर में हमारे बीच बड़ा सौभाग्य कि श्रीमान गौरकृष्ण आगमन परम पूज्य श्री वरिष्ठतम शिष्य हैं जो कई वर्षों से महाराष्ट्र को महत्वपूर्ण सेवाओं में पंढरपुर में भी प्रारंभिक जिन्होंने लगभग 12 वर्ष पूर्व तत्पश्चात आरवड़ी मंदिर में जानते राधा गोपाल मंदिर इस मंदिर के निर्माण कार्य में तो विशेष योगदान दिया। उनकी विशेष सेवा को देख महाराज ने तथा नागपुर में सेवा का उत्तरदायित्व 9 वर्ष प्रभु जी ने बहुत विशेष वहाँ पर विकास किया है नागपुर में। और तत्पश्चात महाराष्ट्र उनकी सेवा को देखकर संपूर्ण महाराष्ट्र के सभी मंदिरों का निरीक्षण की उत्तरदायित्व उन्हें और कृष्ण भक्तों को दिए। जो महाराज जी के नीचे ईसी कमेटी कहते हैं, उस ईसी कमेटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके चेयरमैन है श्रीमान गौरकृष्ण, जो महाराष्ट्र के आदेश में जितने भी महाराष्ट्र में मंदिर है सभी जगह पर नियमित रूप से अब इस वर्ष से वो जाते रहेंगे। तो उसी उद्देश्य से प्रभु का आगमन हुआ है। तो हम द्वारकाधीश मंदिर में सेवक मिलकर होगा 3 बार हम लेकर हार्दिक स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। Thank you very much. I am happy and fortunate to have your association. तो मैं अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ और प्रसन्न हूँ आप सभी का सानिध्य प्राप्त करके। And I hope with your mercy I can say something आप सभी कृपा हो तो मैं कुछ यहाँ कह पाऊँगा beneficial from Srimad Bhagvatam. श्रीमद् भागवत में से जो लाभप्रद हो। It's a very useful verse यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है आज का, because we are hearing about the characteristics of the intelligence. यहाँ पर हम बुद्धि के लक्षणों का वर्णन सुन रहे हैं। And our intelligence is one of the most important factors in
having a successful life. हमारे यशस्वी जीवन में बुद्धि की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है. So therefore, this is something which is, the things which comes out of this sloka is directly, applicable in each of our lives. इस श्लोक में जो कुछ वर्णन किया गया है, ये प्रत्यक्ष रूप से हम सभी के जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू होता है. So Prabhupada says that doubt is an important function of the intelligence. सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद बुद्धि के विभिन्न कार्यों में सबसे पहला है संदेह. ये हम बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. When something is presented to us, जब कुछ भी हमें प्रस्तुत किया जाता है, we should, in the beginning, we should doubt it. प्रारंभिक अवस्था में निश्चित रूप से संदेह होना चाहिए. So doubting it means we turn it around. Okay, you say like this, and is it like that, and how to then understand from this side and that angle. जब भी आपके समक्ष में प्रस्तुत किया जाता है, विभिन्न दृष्टिकोणों से उसे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं उसे. And by doubting, we actually come to a deeper realization of truth. संदेह करने से परम सत्य की और गहरी अनुभूति कर पाते हैं. So the doubting process is a continued gathering of information. यह संदेह की प्रक्रिया मतलब निरंतर रूप से विभिन्न प्रकार की जानकारी एक विषय पर हम प्राप्त करते हैं. Right? We consider various aspects of the topic and okay, if this is like this, then what about that? And then we gather information and we consider it. And Prabhupada says to cultivate intelligence, to become more intelligent, doubting is the process. ऐसे श्री प्रभुपाद कहते हैं बुद्धि का विकास करने के लिए, बुद्धि को अधिक प्रगत करने के लिए संदेह करना आवश्यक है. So one of the, in Vedic line of authority, we basically have three authorities. वैदिक प्रमाण में हम तीन प्रकार के अधिकारियों को one is called Shruti Prasthana. प्रथम को कहा जाता है श्रुति प्रस्थान. One is called Smriti Prasthana. Smriti Prasthana. And the third one is called Nyaya Prasthana. और तीसरा होता है न्याय प्रस्थान. So in connection with intelligence, I was thinking of focusing a little bit on Nyaya Prasthana. तो बुद्धि के आंकर क्रिया का वर्णन किया जाए तो मैंने विचार किया कि न्याय प्रस्थान तीसरा विभाग है, वेद का उसके ऊपर विचार किया जाए. So Nyaya or logic is Prabhupada basically based all his preaching to people outside India on Nyaya. श्रील प्रभुपाद भारत के बाहर पाश्चात्य जगत में कृष्ण भगवान का प्रचार किए, उसका प्रमुख आधार न्याय और तर्क ही था. So Nyaya serves a very important function in our spiritual lives. न्याय हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. So Nyaya basically means that, I can give an example so it's easy to understand. मैं एक उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूँगा सरल करने के लिए. There is smoke on the mountain. एक पर्वत के ऊपर धुआं है. Smoke is related to fire. तो धुआं किसी अग्नि से संबंधित है. Therefore, अतः there's fire on the mountain. पर्वत के ऊपर निश्चित रूप से अग्नि होनी चाहिए. Right? यह एक तर्क है. Smoke and fire are related. क्योंकि धुआं और अग्नि एक साथ जुड़े रहते हैं. No fire, no smoke. और अग्नि ना हो तो फिर धुआं ऐसे ही निकलता है. So there is smoke on the mountains. धुएं को जब पर्वत के ऊपर देखते हैं. No smoke without fire. और धुआं बिना अग्नि आ नहीं सकता है. Therefore we can conclude अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं that there is fire on the mountain also. कि पर्वत के ऊपर अग्नि होनी चाहिए. You buy that? आप समझिए सर. Okay. So similarly, इसी प्रकार से everything in this world
comes from something. संपूर्ण वस्तु संसार में किसी न किसी से उद्धृत होती है. This room has come from something. The universe has come from something. ये कमरा आप जो देख रही है, इसका निर्माण कहीं से हुआ है. इसी प्रकार से ब्रह्मांड भी का निर्माण भी कहीं से हुआ है. Everything therefore has the same qualities as the something, or the cause has the qualities. The effect has the qualities of the cause. तो इसे कहते हैं कारण सिद्धांत. जो परिणाम देखते, परिणाम से हम कारण को समझने का प्रयास करते हैं. तो परिणाम में जो गुण है वो कारण में गुण होने चाहिए. Therefore Krishna is a person. तो परिणाम मतलब ये जगत में हम स्वरूप देख रहे हैं, व्यक्ति देख रहे हैं, निश्चित रूप से उसका जो मूल कारण है भगवान, वह भी पुरुष है. This is logic. तो यह भी न्याय के अनुसार इसको समझाते हैं. This manifestation we are sitting in came from something. तो यह संपूर्ण जगत जहाँ हम उपस्थित है, यह भी कहीं से उद्धृत हुआ है. Whatever is in this manifestation जो कुछ इस जगत में हम देखते हैं is also in the something or in the source. निश्चित रूप से उसका कुछ उद्गम स्थान है. So here in this manifestation there is दृश्य जगत में there is person. सभी व्यक्ति हैं, जिनका रूप है. There is form. सभी का रूप है. There is consciousness. सभी की चेतना है. Therefore, अतः Krishna has form, personality, and consciousness. कृष्ण भी व्यक्ति है, उनकी चेतना है. So by Nyaya, इस प्रकार से न्याय के द्वारा we can establish that Krishna is a person. कृष्ण जो परम पुरुष है. Right? यह हम निष्कर्ष पर पहुंचते इस जगत को देखते हुए. Very, very valuable information. ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है. And from that, then the Nyaya points towards Shruti Prasthana and Smriti Prasthana. और न्याय फिर श्रुति और स्मृति प्रस्थान की ओर निर्देशित करता है. If the source is a person, कि प्रारंभिक जब हम ये समझ जाते हैं कि जो मूल उद्गम है वह व्यक्ति है, he can speak. वह निश्चित रूप से बोल सकता है. And if he is the supreme cause of everything and the knower of everything, यदि वह परम कारण है सभी कारणों का, यदि वह परम ज्ञाता है, he can speak absolute truth. वह ही परम सत्य का ज्ञान प्रदान कर सकता है. So therefore, अतः we can accept Shruti and Smriti Prasthana. तो फिर हम श्रुति और स्मृति प्रस्थान जो परम पुरुष की वाणी है उसे स्वीकार करते हैं. So now basically we have come to a stage where we don't need to doubt anymore. तो न्याय के द्वारा जब हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो फिर अब संदेह की आवश्यकता नहीं होती है. We can put the doubting tool away. We have come to जो उपकरण को प्रयोग कर रहे थे प्रारंभिक अवस्था में, we have come to संदेह उसको भी हम बाजू में रख देते हैं. We have come to the position where we can accept direct knowledge from Krishna. जब हम परम पुरुष श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप से सीधा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. So there was one scientist who asked Prabhupada, he said, what is the proof of eternity? श्री प्रभुपाद एक स्थान पर चर्चा करते कहते हैं कि नित्यता का क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है. And Srila Prabhupada replied, श्री प्रभुपाद उसका उत्तर दिए. तो प्रश्न जो पूछा गया, न जायते म्रियते वा कदाचिन. न जायते म्रियते वा कदाचिन. So Prabhupada, he is speaking Shruti. यहाँ आप देख रहे हो, अब जब प्रश्न पूछा गया श्री प्रभुपाद से, तो श्री प्रभुपाद शास्त्र का आधार मतलब श्रुति का आधार ले रहे हैं. So if we have by Nyaya, if we have analyzed that पहले प्रभुपाद न्याय के द्वारा प्रचार करके तर्क से लोगों को भगवान के विषय में समझाएं, that the source is a person and that he can speak and deliver knowledge, वह व्यक्ति है और वह बोल भी सकता है परम सत्य के विषय में, and that he has the absolute truth, कि वही परम सत्य है. we can accept
2:20 in Bhagavad Gita, Najayate Mriyate Vakadachin. तो फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ भगवद गीता का श्लोक बताते हैं, 2:20 न जायते मृयते वाकदाचिन्। We don't need to give any logical argument any longer. अब न्याय का प्रयोग श्रील प्रभुपाद ने नहीं किया है। Krishna says there is no death, there is no birth at any time for the soul, so that means it's eternal. कहते हैं कि आत्मा के लिए ना तो जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। So, for atheists like us, हम जैसे जो नास्तिक बुद्धि वाले होते हैं संसार में, or like me, मेरे sorry, who is not solidly established in Vedic authority, जो वैदिक अधिकारी को पूर्णतः से स्वीकार नहीं किए, ऐसे नास्तिक बुद्धि वालों के लिए, who is weak-hearted, जिनका हृदय दुर्बल होता है, Nyaya renders support. न्याय तर्क जो है वह आधार प्रदान करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। For us to simply be able to embrace Shruti and Smriti. इस न्याय के द्वारा हम श्रुति और स्मृति को सहज अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। So, a lot of the preliminary books in Krishna consciousness and कृष्ण आंदोलन में अधिकांश जो प्रारंभिक छोटी-छोटी पुस्तकें हम देखते हैं, you would find Prabhupada is solely basing it on Nyaya. श्रील प्रभुपाद ने बहुत अधिक न्याय प्रमाण का प्रयोग किया है। The problem with Nyaya is that it doesn't reach into the spiritual realm. परंतु समस्या यह है कि संदेह का केवल प्रयोग करें, तर्क आप लगाते रहे, तर्क के द्वारा परम सत्य की अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाते पूर्णतः। But Shruti and Smriti does. परंतु श्रुति और स्मृति वह आधार है जो आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश दिलाता है। So if Nyaya leads us there, it is good, well and good, it's enough. यदि न्याय हमें परम सत्य तक पहुंचा सके तो वह हमारे लिए अच्छा है। Because now our faith in Shruti and Smriti Prasthana is strong enough to lift us up, to allow us to be elevated by Shruti and Smriti. तो फिर हम जब श्रद्धा हमारी पूर्ण विकसित रहती है तो श्रुति स्मृति द्वारा हम अपनी चेतना को और अधिक भगवान के समीप ले जा सकते हैं। So, for instance, Prabhupada has made a whole book called Life Comes from Life. उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद ने एक ग्रंथ लिखा, जीवन का स्रोत जीवन, which is solely arguing on the plane of logic. केवल तर्क बुद्धि से ही ऐसा वाद विवाद करके परम सत्य को स्थापित किया है श्रील प्रभुपाद ने। Why did Prabhupada do that? क्यों श्रील प्रभुपाद ने वैसा किया? और atheist? Yeah, but I mean, what is he doing with that book? He's using Nyaya. श्रील प्रभुपाद ने न्याय का प्रयोग किया है इस ग्रंथ में। Why? क्यों? प्रश्न आपसे भी पूछ रहे हैं। To defeat the scientist. Huh? To defeat the scientist. No. प्रभुजी का वैज्ञानिकों को परास्त करने के लिए नहीं। To allow us, the devotees, to embrace Shruti and Smriti. Also to defeat the scientists. What is the first? To allow us to embrace Shruti and Smriti. इसका प्रमुख प्रयोजन था कि उस तर्क के द्वारा श्रुति स्मृति को अपने जीवन में स्वीकार करें और साथ ही में संसारी वैज्ञानिकों को भी प्रचार करने के लिए। The scientists had conquered logic, right? I mean, is religion logic? Is religion logic? क्या धर्म या तर्क क्या आधार पर समझा जा सकता है? Which is most logical, science or religion? अधिक तर्क संगत कौन सा है, विज्ञान है या धर्म है? Huh? ज्यादा लॉजिक कौन सा है, धर्म है कि विज्ञान है? Science, huh? वो हमारे विज्ञान के अध्यापक कह रहे हैं कि विज्ञान है। That's what we sincerely feel. Boy, a scientist, they're very logical. अधिक लॉजिक तो है, अधिक तर्क संगत विज्ञान है, धर्म नहीं। So therefore, that nyaya of the scientist
leads us into atheism. तो ऐसे वैज्ञानिकों का जो न्याय है वो नास्तिकता की दिशा में लेकर जाता है. And what is the basic premise of the atheistic scientists? What is the basic premise they are using? Premise means condition, their basic platform they stand on. तो ये जो नास्तिक जो वैज्ञानिक होते हैं उनका आधार क्या होता है ये सब बहस करने का? Their basic logical argument, what is that? उनका मूल आधार क्या है पूरी चर्चा का वो जितनी करते हैं? Yeah, but basically they are saying, and now don't laugh, okay? Everything came from nothing. उनका मूल जो आधार होता है पूरी चर्चा का कि सब कुछ जो आया है वो कुछ नहीं से आया हुआ है. Everything came from nothing. उनका अंदर ये पूरा निष्कर्ष रहता है कि सब कुछ जो आया वो कुछ नहीं से आया. I mean, what did you say? I mean, प्रभुजी अभी कह रहे थे कि विज्ञान तर्क संगत है परंतु वही सबसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत पर आधारित है. First, there was nothing. तो वो मूर्ख वैज्ञानिक कहते हैं पहले कुछ भी नहीं था इस संसार में. And then the nothingness exploded. तो कुछ नहीं का विस्फोट हो गया और कुछ नहीं का विस्फोट से ऐसा मूर्ख गया. And we accept them as more logical. और हम ऐसे मूर्ख हैं जो उसी को तर्क संगत समझते हैं ऐसे विज्ञान को. That's amazing. Eh? So Prabhupada, he went in and he pushed them away from that platform, the Nyaya platform. श्रील प्रभुपाद महान थे जिन्होंने ऐसे को हिला के उठा दिया और उस न्याय के जो मूर्खतापूर्ण आधार से अलग थे. And by that he didn't say everything came from nothing. He says everything came from something. Life came from life. उन्होंने सिद्ध किया कि सब कुछ इस संसार में जो आया है वो कुछ नहीं से नहीं आया है. जीवन का जो स्रोत है वह जीवन है. So which one is the better logic? तो अब कौन सा न्याय श्रेष्ठ है? श्रील प्रभुपाद का ये विज्ञान होगा. Everything came from nothing or everything came from something? कौन सा सही है? I mean, कि सब कुछ नहीं से आया है या सब कुछ से आया है? just logically speaking, I mean, आपसे वो पूछ रहे प्रभु. like, yeah, I mean, it's kind of like, yeah. Everything came from nothing. I mean, I don't know how many megaton of mass we have in this universe. I mean, trillions, billions, trillions of megaton of mass, of energy, of matter. And trillions and billions and millions of living entities. And it all came from nothing. Right? So, Prabhupada by Nyaya, he establishes that God is the logical conclusion. And that gives us a platform, us, doubters or atheists or us believers in the scientists. It gives us a platform from which we can now begin to embrace Shruti and Smriti. Right, so when Nyaya has done its job of establishing faith in Shruti and Smriti, then we must let Shruti and Smriti do their jobs on our.
फिर तब तर्क, संदेह और न्याय की आवश्यकता नहीं होगी। on our hearts अपने हृदय में फिर किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। and allow the soul to be set free from this ignorance of Nastik. तो ये नास्तिकता का जो अंधकार है आत्मा का ऊपर आवरण है, उससे मुक्त करके शास्त्र को स्वीकार करना चाहिए। And if we are sometimes in our upper progression towards Krishna, if we sometimes get weak, I mean, we are. और अपने आध्यात्मिक जीवन में जब श्री कृष्ण अग्रसर हो रहे हैं, तब जब आपका मन दुर्बल हो जाता है, we are going back to doubting. और फिर हमारे मन में भी संदेह आने लगे भक्ति में आने के बाद, then Nyaya can again support तो फिर कभी-कभी फिर न्याय का आधार लिया जाता है, तर्क का, our absorption in Shruti and Smriti. और फिर उस आधार से पुनः श्रुति स्मृति में का आश्रय लिया जाता है। So therefore we doubt until we have reached a sustained or solid platform. तो जब तक हम एक सुदृढ़ धरातल पर नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संशय की मदद लेते हैं। And then when that is reached, when we are convinced, yes, और जब हम पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि हाँ, अब कृष्ण भगवान है, God exists, भगवान का अस्तित्व है, then we listen to God, तो फिर हम भगवान की वाणी or we जाते हैं, listen to authorities, और फिर हम वो आध्यात्मिक अधिकारी के शब्दों को स्वीकार करते हैं, and then they do the rest और फिर वहाँ बचा हुआ कार्य वो करते हैं, on our hearts, on our consciousness. हमारे हृदय और हमारी चेतना को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। So in this process of shifting our position, in the process of shifting consciousness or leaning towards Krishna, तो ये जो प्रक्रिया है जिससे हम अपनी चेतना को उन्नत करके श्री कृष्ण तक लेकर जाते हैं, the intelligence is very important. बुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, Because it's by the intelligence that we are able to make these logic, reasoning and assumptions. आधार पे हम ये अलग-अलग पहलू से, अलग दृष्टिकोण से विषय को समझ पाते हैं। And therefore, Prabhupada mentions also, therefore we sleep properly. इसीलिए श्री प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य कह रहे हैं कि हम अच्छी तरह से पर्याप्त रूप से सोते हैं। Therefore we analyze Shastra properly. इसीलिए हम विभिन्न दृष्टिकोण से शास्त्र का विश्लेषण भी करते हैं। And in this way we are able to actually make proper discrimination, because intelligence is discriminating and saying, yes, you do that. इस तरह से हम बुद्धि की मदद से विवेक को प्राप्त करते हैं और सही और गलत का भेद पता करते हैं। So even after we have come to the right conclusion about Krishna's existence, the intelligence is still a very important factor in our journey back to Godhead. What is most important, health or sadhana? स्वास्थ्य अधिक आवश्यक है कि साधना अधिक आवश्यक है? Both. स्वास्थ्य जरूरी, साधना जरूरी है। But which one is most important? दोनों में से आपको चुना जाए, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? Health. स्वास्थ्य। प्रभुजी उत्तर दे। Prabhupada said. श्रील प्रभुपाद का उत्तर है कि स्वास्थ्य, शरीर पहले अधिक स्वस्थ रहना चाहिए साधन के लिए। So still on the spiritual path, even now we have embraced Shruti and Smriti, there are so many factors. There are still so many factors within Shruti and Smriti which can be bewildering. So therefore we need a clear and sharpened intelligence to know, yes, now I should do this, now I should do that in devotional service.
So therefore we study Prabhupada's books, we take proper rest, and then we can peacefully follow authorities. Hare Krishna. We have to stop at 9, right? So any comments or questions? Is there a question? Yes. Definition of Nyaya. That is, very briefly, A equals B, B equals C, therefore C equals A. They're connected. न्याय मतलब इसको दूसरे शब्दों में तर्क कहते हैं, तर्क से कुछ लॉजिक में क्या कहेंगे? No, A equals B. प्रभु समझा रहे हैं, जैसे A के बराबर B है और B के बराबर C है, तो न्याय आपको इस निष्कर्ष पर जाता है कि C और A एक है. That's the basic. That's the basic definition. Like there is smoke on the mountain, that's A. Where there is smoke, there is fire. So A is connected to B. Right? Through smoke. There's smoke on the mountain. Fire and smoke are always together. Therefore, there's also fire on the mountain. Right, so you basically connect the dots. Yeah. I mean, you have what is called a premise. You have a statement, a true statement. You have two of those. And on those two statements, you can make a logic conclusion. So if it's true that there is smoke on the mountain, and if it's true that there cannot be smoke without fire, then it follows that there is fire on the mountain. So similarly, if everything comes from something, if everything in this world has a cause, and if it's true that whatever qualities we see here is also in the source, then Krishna is a person. If any of them is a false statement, if any of the two premises or conditions are false, then the logic conclusion fails. So everything came from nothing. Therefore, everything has qualities like nothing. Therefore, God doesn't exist. It's not logical. It's not logical. Because the premise that everything comes from nothing is false. And it's also said in Shastra that the difference between an Uttam Adhikari and Madhyam Adhikari is that the Uttam Adhikari, he has applied Nyaya on Shruti and Smriti.
तो शास्त्र उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के अंदर उत्तम अधिकारी न्याय का भी प्रयोग कर रहे थे स्मृति और श्रुति को प्रस्थापित करने के लिए. Because a Madhyamadikari, he can be defeated by a good logician, a good... मध्यम अधिकारी परास्त किया भी जा सकता है कभी, परंतु उत्तम अधिकारी नहीं. So a Madhyamadikari, he knows the truth. मध्यम अधिकारी परम सत्य का ज्ञान रखता है. So how he can be defeated? वो कैसे परास्त हो सकते हैं? Because he has not applied Nyaya to completely understand the truth. परम सत्य को समझने के लिए उसने न्याय का प्रयोग नहीं किया है. Right, but he is situated nicely in the truth, but he can be defeated. But as soon as he applies, सत्य में स्थापित होगा परंतु उसको कोई परास्त कर सकते हैं. then whenever someone brings up an argument, he can see that's a false argument. बड़ा तर्क करने वाला व्यक्ति है तो हार भी जाता है. Because everything doesn't come from nothing or whatever it might be, right? I have one question. Yeah? The atheists are struck on that singularity. Everything is coming from the singularity of nothing. Yeah. Nothing. Then they can ask that from where Krishna came. Yeah. Yeah. But then we would then say that the source doesn't necessarily need to come from anywhere. You know, an ultimate cause would be an eternally existing substance or person or thing. They are making the false assumption that the ultimate source came from somewhere. Ultimately, when you regress far enough back, you have to come to some kind of constant eternal substance. That would be our argument, that God is eternal, so he didn't come from anywhere, he has always been there. Right? And that's the truth. Then you can choose to believe it or not. But you cannot argue with the fact that even I think a scientist would never argue that existence is not eternal. Because, I mean, the law of conservation of energy states that no energy comes or disappears. Yeah, energy is yes, the total amount of energy is constant, right? So constant means eternal. But the main point with Nyaya is for us that it allows us to embrace Shruti and Smriti. Whereas maybe in our beginning of our devotional life, you know, Najayate Mriyate Vakadachin, that's your proof. We wouldn't be able to embrace it, but when we have gone through the Nyaya, Prabhupada takes us through the Nyaya, then yes, we have made the doubting process to come to the logical understanding, yes, everything comes from something, life is eternal. So therefore now I can embrace the authorities of Smriti and Shruti Prasthana. Grandaraj Srimad Bhagvatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Gaurkrishna Prabhuji ki jai.